So when I work out, my brain thinks, my mind starts thinking. So what did I think today? There's a case on me in Bundi, Rajasthan, because I was a victim of fake news. Now, fake news is spread in India probably through WhatsApp a lot because it's an easy tool to spread fake news. So it's spread through WhatsApp. Now, मैं भी उसकी victim बन गई, and a Congress worker has put a case on me, and Congress as a committee, as a political party, has not done anything on it. Till now, though I have apologized and blah 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 and blah blah blah. Rahul Gandhi ji in the parliament will talk about fake news being spread by BJP political party. But let me tell you that this country, this vast country, this world's largest democratic country, if you have citizens in this country that support a narrative that Muslims are minority and wearing hijab or wearing a burqa or covering a face is a woman's choice which she has been taught since childhood. क्योंकि जब आप एक थॉट को बचपन से एक चाइल्ड के अंदर ब्रेन वॉश करके डालते हैं तो वो थॉट उसकी रियलिटी बन जाती है. ठीक है, कोठे पे भी जो लड़कियां पैदा होती हैं वो सोचती हैं कि दिस प्रोफेशन इज़ अ गुड प्रोफेशन बिकॉज दे आर इन दैट इन्वायरमेंट सिंस बर्थ. सो डोंट टेल मी what kind of brainwash is good and what kind of brainwash is bad. As an individual, we all have a mind and we all have a thought process. So according to my thought process, if I feel that this brainwash, where people who are educated Indian citizens will say that XYZ is a minority, and I am supposed to believe that after seeing the reality, ground reality, that they are not a minority, then that narrative is a brainwash. To counter that narrative, if WhatsApp University is spreading their narrative, they have a right to do that. Because how else would you counter the narrative where it is said that burqa is a choice of a woman? है ना? Because she is made to believe from her childhood that that is a good thing. So I'm not against the religion. Please understand. I love Shah Rukh Khan as an actor. Okay, I don't know him as a human being, but as a human being, whatever I have seen of him publicly, I think he's a good human being. I supported him in his fight when his child was arrested in a manner which was not legal, but through legal officials. So I have a thought process. Don't try to label me as somebody who's against a religion. Don't do that. It is against a practice. Just because a practice is worldly followed by so many people, that does not mean it is a correct practice. Child marriage was also followed a lot in Bharat before it was considered to be a bad practice and illegal practice, and a law was passed against it. So don't try to label me because I'm not what you want me to be portrayed as. Yeah, have a great day. It's Sunday. Enjoy yourself. It's raining. And Sangram got up today. It's 5 o'clock to go and play badminton. But I उसको रोज अपना बैडमिंटन का हॉल का बुकिंग 5 AM पे कर देना चाहिए, so that he's out of the house. I can do my yoga and we can be good to each other because दोनों का वर्कआउट 7:30, 8, 9 बजे तक हो जाएगा, है ना? So our fights will be less and trolls will have lot of more time to concentrate on other celebrities. दिक्कत हो जाती है ना, 1 मिनट अभी रुको. आपका कोई कार्ड वार्ड है? आपने तो कोई यूनिफॉर्म पहना है ना, बस आपका, बिकॉज मुझे व्हाट्सएप पे और कोई डिटेल तो आया नहीं है कि ये बंदा आएगा, ये बंदा नहीं आएगा. मुझे है ना कुछ, मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है ना. मेरे घर में कॉकरोच है, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं. ये ऊपर शायद कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है जिसकी वजह, कॉकरोच नहीं, लिजर्ड, लिजर्ड आ गए हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है. हेलो,
अच्छा सुनो, वो पेस्ट कंट्रोल से वो पर्सन आया है, आप एक बार बात कर लो बिकॉज मैं पहली बार करवा रही हूँ एंड मुझे वो अर्बन क्लैप वाला रिपीट नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है। लिजर्ड, छोटी छोटी बच्चे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। लिजर्ड के लिए आप क्या करोगे? स्प्रे करेंगे सारे कोने में, बाथरूम के कोने में। देखो घर में तुमको बता देती हूँ, घर छोटा ही है, 2 बेडरूम है, घर छोटा है, ठीक है? ये पूरे घर का ये छोटा है, मैं कह रही हूँ अगर 2 बेडरूम है अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर, ठीक है? ये बाथरूम आपके बेडरूम हो गया, बाथरूम हो गया। हाँ, आपने वो बैल्कनी में किया है। नमस्ते आयुष, भैया से बात करो। ये आदमी पेस्ट के लिए आया था, इसकी एंट्री डिलीवरी करके की गई है। मुझे पता नहीं ना, भैया बैठो। ये डिलीवरी से एंट्री हुई है। मैं तो दीवार में बैठी ठीक है, समझा मैं किसी बात क्या, ठीक है ना? तो ये मेरे ब्रदर के पोस्ट में है, तो मैं चुपचाप बहुत अच्छी बात है, मेरा दिल में उनकी फैमिली में बहुत से लोग एयरफोर्स में हैं। उनकी फैमिली में चाहे प्राइवेट कोलाबा में मैं हर 10 दिन में जाता रहता हूँ। मोदी जी के पिताजी ने वो जो जरूर नहीं, वो बात से है जब ये आपने पुलिस में बोल दिया कि हम पुलिस अफसर है, हमें खतर दी थे, इसलिए बात होती नहीं। हमारे वोट कभी नहीं बोलते हैं कि हम उसी से पहले बोला था मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में, मेरे फादर नाम नहीं मिले, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे इसकी एंट्री ठीक करवाओ। ओके। क्या होता है, स्कैम तो होता है, मेरे स्कैम मिल जाए, ठीक नहीं बच्चे हैं ना, बात वो नहीं है, बात कुछ बेटर कंटेम्परेरी इफेक्ट लगा ना। Apparently, I had done a pest control just like in the month of May, and because of the construction work that's going upstairs, lizards came into my house, which never happens. So Urban Company, it's not Urban Clap, I say Urban Clap, it's Urban Company. They promised me a refund because their agent Bharat, though had great reviews, did not do the work properly. I complained against him. He was supposed to come for a free service, but he did not come for a free service under the warranty. I complained to the call center. They did all that time pass with me. They assured me that the money is going to be transferred back into my account, but it never got transferred. So as I'm not interested in giving petty things more importance than they deserve, but just to create awareness, Urban Company ka pest control facility is shit.
they take money from you and send agents who do nonsense. उसके बाद अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वो आपको वारंटी पीरियड में भी रीविजिट नहीं देते हैं, और अगर आप रिफ़ंड मांगते हैं तो आपको रिफ़ंड भी नहीं देते. So I again tried another company, some Best My Control company from Google, which was near my area. They gave me some confirmation on WhatsApp. I told them my problem. They did not send me details on email. Okay, so I did not know if the pest control is happening or not happening. But then they sent their pest control guy on Sunday, and his entry was made as delivery entry when it should have been a pest control entry. So the watchman's in my security fed wrong information in the MyGate application. उसके बाद ये ऊपर आता है, अपना सब कुछ स्प्रे व्रे करता है. मेरे हस्बैंड को मैं बोल देती हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने मेरे हस्बैंड को बोले बिना सर्विस करी थी तो प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आई डिड नॉट वांट टू ट्रबल हिम फॉर अ पेटी अमाउंट. बट आज का मैंने उनको मेरे हस्बैंड को बता दिया. नाउ द ओनर डिड नॉट गिव मी द बिल ऑन द ईमेल, सेंट मी अ PDF फाइल with a QR code. Worst come to worst, we know that this company is a fake company. If it is a good company, I'll tell you it's a good company. If it's a fake company, the information will be for all of you on social media so that you don't use this company again. Yeah. Bye. Have a great day.